Students, today we will start functions. Relation सरला function start करिबा. Function chapter रे 2-3 terms repeatedly use हबो से गुडा के discussion करके function भितर को enter करिबा. The terms are first intervals. Intervals in number system. Look at, if I will ask a short question, 5 ରୁ 10 ଭିତରେ ଥିବା all numbers ଲେଖ. तो 5 ରୁ 10 ଭିତରେ how many numbers ଆମେ ପାଇବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ infinite numbers are present in between 5 to 6. So write all the numbers from 5 to 6 माने ଆମେ ତାକୁ list କରିକି ଲେଖି ପାରିବା କି? ଲେଖି ପାରିବା ନା? So ଆମେ ତାକୁ symbolically represent କରିବା. That is interval. For example, 5 ରୁ 10 ଭିତରେ all numbers माने 5, 10 ଲେଖିକିରି both side bracket ଦେଇ ପାରିବା. And two types of brackets are used. The first information is, this informs about all numbers present in between 5 to 10. Then what is the meaning of this and this? This is called open interval and this is called closed interval. What is the difference? Open interval means 5 ରୁ 10 ଭିତରେ ଥିବା all numbers excluding 5 and 10. 5 is not included, 10 is not included. 5 ର just पर number ଠାରୁ 10 ର just ପୂର୍ବ number पर्यंत. Closed interval माने 5 to 10 ଭିତରେ ଥିବା all numbers including 5 and 10. 5 and 10 ବି ଏ ଭିତରେ include ହେଇକି ରହିବ. If ଏମିତି ଆସିବ 5, 10, one side open, one side close. अब हमें सेमी ओपन इंटरवल कहि परिबा, सेमी क्लोज इंटरवल कहि परिबा. मीनिंग कोन? 5 ରୁ 10 ଭିତରେ ଥିବା all numbers including 10 excluding 5. जाको ओपन इंटरवल लागि सेटा एक्सक्लूड हबो, जाको क्लोज इंटरवल लागि सेटा इंक्लूड हबो. सिमिलरली ये भी एपटु आसी परिबा, से भी सेपटु आसी परिबा, सेम मीनिंग. Okay, and symbolically A B in general दे देबी. A B open interval माने मैं कौन लिखिबी? X टा A रू B भितरे अछि माने A less than X less than B. X टा A रू B भितरे रहिला but A और B नुह is equal to नहीं ठीक. So X is equal to A है परिबने, X is equal to B है परिबने, but X रो value A रू B भितरे all numbers है परिबो. If A to B close interval show करिबी, if A to B close interval show करिबी, then कौन हबो ना? This indicates A less than X less than B is equal to including is equal to A less than equal to X less than equal to B. Okay, another some terms are required, that is 1-1 relation, 1-many relation, many-1 relation, many-many relation. Okay, so 1-1 relation. 1-1 relation माने what happens? This is a set A, this is a set B. Let A भितर रहिला 1, 2, 3. Okay, B भितर रहिला 1, 4, 9. 1, 1 से रिलेट हैला if f of x is equal to x square नेली 1, 1 सहित 2, 4 सहित 3, 9 से रिलेट हैला and r गोटिए को तार गोटिए से रिलेट होची. This is 1, 1. Similarly 1-many ने भी माने f of x is equal to root x ने भी एई पटे 4, 9 set A set B plus 2 minus 2 plus 3 minus 3. तो root x relation रे कौन हबो? 4 2 को लागिबो, 4 minus 2 को भी लागिबो, 9 3 को लागिबो, 9 minus 3 को लागिबो. So एई पटर 1 को एई पटर many होची, this will be 1-many. Similarly many-1 and many-many relation रो meaning भी बुझि परथुबो. Now pause the video
and write the note. Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note. The definition or concept of function can be explained or discussed in three methods, three approach. First one is function as a relation discussion kariba. Second one is function as a correspondence or mapping or a rule discussion kariba. Third रे function as a mathematical machine discussion करिबा. First function as a relation माने if हमें set A रू set B को गोटे function define करिबा माने सेटा गोटे relation जी की किछि condition obey करिबो. ओके रिमेंबर पिला माने इफ एफ गोटे फंक्शन मु सेट ए रू सेट बी को डिफाइन करिबी माने सेट ए रू सेट बी भितर से गोटे रिलेशन हेतिबो एंड किछि कंडीशन ओबे कले ताको फंक्शन कहै जिवो. व्हाट आर द कंडीशंस? द कंडीशन इज फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए there exists a b belongs to set b such that a b belongs to f. मतलब कौन सेट ए रो एवरी एलिमेंट पाई सेट बी रे निश्चित भाव गोटे एलिमेंट थिबो जेमिति कि से ऑर्डर पेयर टा फंक्शन सेट रे प्रेजेंट थिबो. फंक्शन सेट माने कोन से रिलेशन सो ता भीतर एलिमेंट गुडा को ऑर्डर पेयर फॉर्म रे थिबो. सो इफ से ऑर्डर पेयर रे सेट ए रो एवरी एलिमेंट प्रेजेंट अछि एंड एवरी एलिमेंट पाई सेट बी रे भी सेमती गोटी गोटी एलिमेंट अवेलेबल अछि जेमिति कि सबारे ऑर्डर पेयर रे रहि पारिबे. माने फंक्शन सेट भितर जहाँ सब ऑर्डर पेयर गुडा थिबो तर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट रे सेट ए रो ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट हेबा दरकार एंड सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट गुडा करे जहाँ हमें लिखिचे से गुडा को सेट बी रे भी प्रेजेंट हेबा दरकार. सेकंड कंडीशन इज इफ ए बी फंक्शन भितर अछि एंड एसी फंक्शन भितर अछि देन निश्चित भावे बी इज इक्वल टू सी हबो. फंक्शन भितर जदि ए बी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट अछि एसी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट अछि तबरे निश्चित भावे बी इज इक्वल टू सी हबो. ता माने कोन दिस सेट रो गोटे एलिमेंट माने ए बी और सी दिटा अलगा अलगा एलिमेंट सहित अटैच हे परिबो नाही. ऑर्डर पेयर रे फर्स्ट रे ए अछि माने सेकंड रे जदि बी रहिला दिस ए टा आउ का सहित ऑर्डर पेयर रहि परिबनी ए सी हे परिबनी ए डी हे परिबनी. ओके ए सहित बी जदि ऑर्डर पेयर रहिला ताहेले सेटा यूनिकली ही रहिबो. आर मीनिंग होचे सेया एग्जांपल जे कोडा डिस्कस करले आउ टिके क्लियर हबो. एटा हला दिटा डेफिनेशन जे अंडर व्हिच कंडीशन ए रिलेशन विल बी फंक्शन. मु तार टिके इजी कंक्लूजन्स जगह डिराइव करछि चेक करिया पे क्वेश्चन पडिबो रिलेशन के फंक्शन कि नै. सो तार इजी कंक्लूजन्स कोन देखो एठी जो लिखिला फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए माने फंक्शन सेट भितर सेट ए रो ऑल एलिमेंट प्रेजेंट हेबा को बाध्य. तेनु फर्स्ट कंडीशन टा कले डोमेन ऑफ फंक्शन मस्ट इक्वल टू सेट ए. देन आसिला ऑल एलिमेंट्स ऑफ रेंज मस्ट प्रेजेंट इन सेट बी. ओके एटा कोट आसिला देखो एठी जो कहिला फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ. तार मतलब कौन आर रेंज टा सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट गुडा को निश्चित भावे बी रे प्रेजेंट थिबो. बी बाहर जदि किछ गोटे सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट अछि सेटा रिलेशन हबनी कि फंक्शन हबनी. तेणु सेकंड पार्ट रो सेकंड कंक्लूजन आसिला ऑल एलिमेंट्स ऑफ रेंज मस्ट प्रेजेंट इन सेट बी. तो थर्ड कंडीशन टा एठला आसिला जे ए जो सेट ए बा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ए टा बी सी डी मोर देन वन सहित लगी पारिबनी. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ए टा सेपटे सेट जनक सहित ही लगी पारिबो. तेणु कंक्लूजन आसिला द रिलेशन मस्ट नॉट बी वन मेनी कारण ए टा बी और सी सहित लगी पारिबनी. सो रिलेशन टा वन मेनी हे पारिबो नाही. This is the definition. These are the conclusions to check. Now we will go for examples. So conclusion है गोटे रिलेशन सेट ऑर्डर पेयर गुड़ाक लिखाई से ऑर्डर पेयर रो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट गुड़ाक रे सेट ए रो ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट थिबा दरकार एंड सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट गुड़ाक को सेट बी रे प्रेजेंट थिबा दरकार एंड रिलेशन टा वन मेनी हो नथिबा दरकार.
सो एथिरु गोटे जिनस आइडिया कर पिला माने सेट बी रो ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट रहिबो एटा कंडीशन भीतर आसुनी फंक्शन सेट भीतर सेट ए रो ऑल एलिमेंट प्रेजेंट रहिबो एटा कंडीशन भीतर आसुची किंतु सेट बी रो ऑल एलिमेंट प्रेजेंट रहिबो सेटा कंडीशन भीतर आसुनी तार फंक्शन सेट रो रेंज रो एवरी एलिमेंट सेट बी रे प्रेजेंट थिबा दरकार सेट बी रे एमिति भी किसी एलिमेंट एक्स्ट्रा रही जाइछि जो रेंज बाहर तबे भी फंक्शन हबो ओके नाउ ए पॉइंट गुडा को माइंड रे रखो हमें एग्जांपल को जिबा एग्जांपल देखो लेट सेट a इज इक्वल टू 1 2 3 सेट b इज इक्वल टू ab व्हिच रिलेशंस आर फंक्शंस सो फर्स्ट देखो आर इज इक्वल टू 1a टू b फर्स्ट कंडीशन पकेबा फर्स्ट कंडीशन होची आरो डोमेन सेट ए सहित सेम हेबा दरकार एटे डोमेन अछि 1 2 सेट ए सहित सेम होनी सो एटा फंक्शन हबो नाही देन r2 अछि 1a 2b 3a तो फर्स्ट कंडीशन डोमेन देखो 1 2 3 डोमेन टा सेट ए सहित सेम हे जाउची फर्स्ट कंडीशन हे गेला सेकंड कंडीशन कोन सेकंड कंडीशन होची रेंज रा सेट बी रे प्रेजेंट थिबा दरकार रेंज रे की अछि a b सो रेंज रा भी सेट बी भीतर प्रेजेंट अछि थर्ड कंडीशन टा कोन थर्ड कंडीशन टा रिलेशन मस्ट नॉट बी वन मेनी देखो रिलेशन टा वन मेनी होची की 1a 3a अछि 1a 3a टा वन मेनी होची की नो मेनी वन होची कारण 1 3 एपट सेट रे 1 3 एपट सेट रे ओनली a रहला सो एपटे मेनी एपटे 1 रहला सो मेनी 1 होची ओके सो दिस विल बी फंक्शन नाउ कम टू दिस केस डोमेन देखो 1 2 3 डोमेन इज इक्वल टू सेट ए कंडीशन 1 फुलफिल हैला नाउ रेंज रे की अछि ए बी अछि रेंज प्रेजेंट इन सेट बी सेकंड कंडीशन फुलफिल हैला तापर देखिबा रिलेशन मस्ट नॉट बी वन मेनी सो देखो एठी 1 लागि छि ए को 1 लागि छि बी को सो वन मेनी हे गेला ना नहीं सो दिस इज नॉट ए रिलेशन ओके एवरीथिंग दिस इज द अप्रोच ऑफ फंक्शन on relation तो second approach to the function is correspondence mapping or rule मैंने कौन कहूची ना if f is a function from a to b then it is a correspondence or mapping or rule which associates the elements of a and elements of b माने एमिति गोटे रूल बा एमिति गोटे करेस्पोंडेंस एमिति गोटे लिंक जे कि सेट ए रे एवरी एलिमेंट को सेट बी रे गोटे गोटे एलिमेंट से एसोसिएट करिवो जेमिति कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इट क्लॉज टा कोन लगौची एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज linked to every element of set A is linked to unique element in set B. Function is a correspondence or mapping. रे कहूची कोन ना every element of set A is linked to unique element in set B. देखो this clause रू भी ए मीनिंग गुडा का आसीबो केमिति every element of set A link अछि तेणु फर्स्ट कंडीशन आसी गला डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू सेट A is linked to a unique element in B माने सी जा सहित लिंक हेछि से B रे रहबा दरकार यूनिक हेबा दरकार B रे रहबा दरकार रो कंडीशन आसी गला द ऑल एलिमेंट्स ऑफ रेंज मस्ट प्रेजेंट इन B देन यूनिक एलिमेंट बोली कहिछि एटा सेट A रे एवरी एलिमेंट B रो गोटे एलिमेंट सहित लागिबो जोटा कि यूनिक माने सेट ए आउ का सहित लागि परिबनी यूनिकली गोटे एलिमेंट सहित लागिबो सेहितर कंडीशन आसिला रिलेशन मस्ट नॉट बी वन मेनी सो दीटा डिफरेंट थिंग बट सेम मीनिंग सेमिति थर्ड टाइप टा कहूची थर्ड टाइप टा कोन कहूची ना फंक्शन इज ए मैथमेटिकल मशीन फंक्शन इज ए मैथमेटिकल मशीन देखो फंक्शन और मैथमेटिकल मशीन जोथिरे कि आमे इनपुट किछि गोटे वेरिएबल देले आउटपुट किछि गोटे बाहरिबो लुक एट algebraic function बा मैथमेटिकल फंक्शन लो केमिति लिखा जाउची फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 ये गोटे फंक्शन
y is equal to f of x is equal to 2x square minus 1 एमिति रिप्रेजेंटेशन रे हम कोन भाबिबा ना ये गोटे एमिति मेसिन एपटे जे हम x एंटर करबा आउट हबो कोन 2x square minus 1 सेमिति एपटे जे हम 1 एंटर करबा आउट हबो कोन 2 जगह रे 1 पकेले जहा आसीला ताको लेखा हबो केमिति फॉर एग्जांपल x जगह रे जदी 1 पुट कली f of x बा y कोन आछी 2 into 1 minus 1 1 आछी सो एमिति फंक्शन रो लेखा जिवो x को 2 पुट कली x को 2 पुट कले 2 रो स्क्वायर 4 4 2 से 8 सो x जगह रे 2 पुट कले 7 आसीला सो एमिति ऑर्डर पे गुडा लेखा हो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट गुडा को इनपुट सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट गुडा का आउटपुट एमिति भी बेले बेले भाबिबा हमें फंक्शन गोटे मैथमेटिकल मशीन जोथरे हमें x एंटर कले आउटपुट कोन हबो f of x जा को हमें y कहि की रिप्रेजेंट करछे वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट पिला माने वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट भलो रे बुझी देली नोट लेखो थरे दी थरा रिपीट करो नाउ पॉज द वीडियो and write the note. Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note. Now pause the video and write the note. Okay, now we conclude a relation can be a function under some conditions. When all functions are relations but all relations are not functions. Now relation can be converted to a graph. Any relation can be converted to a graph. For example, मैं लिखिली s is equal to ut plus half at square. मैंने only t को variable u और a को constant ले s is equal to मैं लिखी पारिबी 3t minus 5t square. Okay, so here s and t भितर रिलेशन होची s is equal to 3t minus 5t square ए रिलेशन टा को ग्राफ रे कन्वर्ट कर दे परबी केमे ग्राफ रे कन्वर्ट करबी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रे हेल्प नेबी स्ट्रेट लाइन हबो कि पैराबोला हबो कि एलिप्स हबो इक्वेशन रो आईडिया करी करी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रे हेल्प नै करी शेप टा जानिबी तापरे t जगह रे 0 पकई कि s केते बाहर करबी t जगह रे 1 पकई कि s केते बाहर करबी एबे 3-4 टा वैल्यू बाहर करबी देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रो कांसेप्ट गुडा को आईडिया करबी ग्राफ केमिति हबो सो एनी रिलेशन कैन बी कन्वर्टेड टू ए ग्राफ ग्राफ रे भी हम जानि परबा इट विल बी ए फंक्शन और नॉट ओके केमे जानिबा देखो फर्स्ट फॉर एग्जांपल लेट दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स ए रिलेशन दिस इज x दिस इज y दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स ए रिलेशन नाउ एमिति गोटे लाइन ड्रा करो एमिति गोटे लाइन ड्रा कले x रो गोटे पर्टिकुलर वैल्यू पई y रो दुईटी वैल्यू आसिला ना नहीं x रो गोटे पर्टिकुलर वैल्यू पई y केते लेट दिस वैल्यू टा x1 सो x1 रे y केते माने जने एतिकी भी कहि परिबो आउ जने एतिकी भी कहि परिबो बिकॉज़ x1 को करेस्पोंडिंग है बोथ अछि let this point plus y1 this point minus y1 हे पार एतिकी जिगुले एतिकी भाबिले बट मेन पॉइंट कोन ना x1 पई y रो वैल्यू केते माने जडे प्लस y1 कहि पारे और जडे माइनस y1 कहि पारे सो आकु जदी मो ऑर्डर पेयर लिखिबी x1, y1 ऑर्डर पेयर भी सेट भीतर रहइबो रिलेशन भीतर x1, माइनस y1 ऑर्डर पेयर भी रिलेशन भीतर रहइबो सो x1 y1 x1 माइनस y1 एमे जदी रहला 1 मेनी हे गेला ना नहीं आ यूनिक एलिमेंट को एसोसिएट कले कि कलानी सो दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन ए ग्राफ टा जो भी रिलेशन को इंडिकेट करछि इट इज नॉट ए फंक्शन रिलेशन ग्राफ टा फंक्शन रिप्रेजेंट करछि ना नहीं जानिबा पई ओके केमे जानिबा ग्राफ टा फंक्शन को रिप्रेजेंट करछि ना नहीं ना y एक्सिस को वर्टिकल लाइन उठे ड्रा करो इफ दैट लाइन टा ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट रे इंटरसेक्ट करिवो 2 3 4 पॉइंट रे इंटरसेक्ट करिवो देन इट विल बी नॉट ए फंक्शन कारण x रो पर्टिकुलर वैल्यू पाई मोर देन 1 एलिमेंट्स आसीबो सेमिति इफ हमें एमिति गोटे ग्राफ ड्रा करिबा दैट इज नॉट आल्सो ए फंक्शन एमिति गोटे ग्राफ ड्रा करिबा रिलेशन दैट इज नॉट आल्सो ए फंक्शन बट इफ हमें एमिति गोटे ग्राफ ड्रा करिबा सेटा फंक्शन होबा ना नहीं देखो गोटे
वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन रे ड्रॉ कले से ग्राफ को वन पॉइंट रे ही कट करछि जोटी भी ड्रॉ करछ कर से ग्राफ को वन पॉइंट रे ही कट करबो मोर देन वन पॉइंट रे से कट कर परबो नाही सिमिलरली एमिति गोटे ग्राफ लेट एमिति गोटे ग्राफ अछि ए ग्राफ को जदि हमें पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करिबा ताहेले मोर देन वन पॉइंट रे कट करछि कि कट करनी सो दीज टू ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स फंक्शंस and what is the difference between these two look at here x axis को गोटे पैरेलल लाइन ड्रॉ कले ग्राफ को सी 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करूछि फंक्शन है परिबो फंक्शन रो कंडीशन पे म कोन कहली y एक्सिस को पैरेलल लाइन रे ड्रॉ कले इफ सी मोर देन 1 पॉइंट इंटरसेक्ट करे ताले फंक्शन होबनी कि जडे x एक्सिस को पैरेलल लाइन रे ड्रॉ कले फंक्शन होबो काहे के होबो देखो x एक्सिस को जदी पैरेलल लाइन रे ड्रॉ कली करेस्पोंडिंग पॉइंट देखो x डिफर हैला लेट एटा x1 एटा x2 दिस इज ओरिजिन दिस टू पॉइंट रो x कोऑर्डिनेट डिफर हैला but y coordinate same है ना नहीं so if order pair form रे लिखी भी x2y and x1y हबा ना नहीं so x2y और x1y लिखिले ये one many हला कि हला नहीं many one हला तो many one जदि हबो फंक्शन हबो कारण फंक्शन कंडीशन भीतर हमर कोन आछि रिलेशन must not be one many so एठी many one होछि तने एटा फंक्शन हबो but एटा many one function हबो and here केमिति भी लाइन रे ड्रॉ करले ग्राफ को 1 पॉइंट रे इंटरसेक्ट करबा जेमिति भी तमे लाइन रे ड्रॉ करछ करो ग्राफ को 1 पॉइंट रे इंटरसेक्ट करबा so this is one function but this type of graph जदि आसिला many one function and एमिति सिचुएशन जदि आसिला not a function एमिति गोटे रिलेशन रो ग्राफ रो भी हमें फंक्शन सब जानी परिबा ओके नाउ वी विल डिस्कस डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन डोमेन एंड रेंज विषय तो रिलेशन सेट रो जानिछ एठिया गोटे एक्स्ट्रा वर्ड आसिला कोडोमेन सो व्हाट इज डोमेन कोडोमेन एंड रेंज लेट f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट A to set B okay for example f of x is equal to something let 1 by x so what is domain two type रे कोई परिबो domain कोन set A is domain also set A भितरे को एलिमेंट गुडा को रहिबो जो एलिमेंट गुडा को पय this function will exist a real value okay set A is domain सत but set A भितर को एलिमेंट गुडा को प्रेजेंट थिबो निश्चित भाबे सेही एलिमेंट गुडा प्रेजेंट रहइबो जो गुडा को पय फंक्शन टा डिफाइन हेई परिबो ऑल प्रेजेंट न रही पारे सब लिमिटेड प्रेजेंट रही पारे बट डिफाइन न होतबा कोनोसी भी वैल्यू सेट A रे प्रेजेंट हेई परिबो नाही फॉर एग्जांपल इफ f of x is 1 by x नेली ताहेले x is equal to 0 रे दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड 1 by 0 कोन हम जानिबे सो जेहेतु 1 by x रे x is equal to 0 by not defined सो सेट A भितरे केबे भी 0 रही परिबो नाही except 0 all other real numbers present हेले सब गुडा को रियल नंबर जे प्रेजेंट हम से हम कहूनी सेट A भितर 1 2 3 4 5 रही परिबो बाकी किछ न रही पारे इफ सेट A भितर 1 2 3 4 5 रहिला सेटा हला तार डोमेन सेट A भितर जदी 1 to 100 पर्यंत रहिला वन डोमेन हला 1 to 100 बट डोमेन भितर एमिति किछ वैल्यू रही परिबोनी जो वैल्यू पय फंक्शन टा अनडिफाइंड हि जिवो फॉर एग्जांपल इफ f of x is equal to root x अछि ताहेले डोमेन भितर कोई भी नेगेटिव नंबर रही परिबो नाही बिकॉज़ x नेगेटिव हेले तार रूट ओवर डज नॉट एग्जिस्ट सो डोमेन को हम टू टाइप्स रे एक्सप्रेस करि परिबा दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच द फंक्शन f of x exist or if a function f is defined from set A to set B then A is the domain जेमिति सेट A टा डोमेन सेमिति सेट B को कहा जाउची कोडोमेन then what is range range is
फंक्शन सेट रो आउटपुट वैल्यू गुड़ाक जहाँ आसीबो बा फंक्शन सेट को मुझे ऑर्डर पेयर फॉर्म रे लिखिली ताहेले सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट रे जो एलिमेंट गुड़ाक आसीबो से गुड़ाक होची रेंज सेट बी टा होची पूरा कोडोमेन फॉर एग्जांपल देखो सेट ए इज इक्वल टू नेली 1 2 3 सेट बी इज इक्वल टू नेली 1 4 9 16 25 तो गोटे फंक्शन एस्टाब्लिश कली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो इफ आपको मो फंक्शन सेट टा को ऑर्डर पेयर रे लिखिबी एक्स जगह 1 नेले 1 1 आसीबो 2 नेले 2 4 आसीबो 3 नेले 3 9 आसीबो एतिकी हे गला फंक्शन टा सो सेट ए रो ऑल एलिमेंट यूज हबो एज पर कंडीशन बट सेट बी रो कोन ऑल एलिमेंट यूज हबा कंडीशन अछि नाही सो 16 and 25 सेट बी रे थिला बट फंक्शन भितरे यूज हला नाही एबे नहीं परबा अगर हम डिस्कशन करछि दिस केस रे डोमेन माने कोन क्लियरली 1 2 3 डोमेन को डोमेन होछि सेट बी टा 1 4 9 16 25 रेंज होछि कोन 1 4 9 फंक्शन सेट रे ऑर्डर पेयर रो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट गुडा को होछि रेंज सेट बा आउटपुट गुडा को इनपुट 2 हेले आउटपुट 4 इनपुट 3 हेले आउटपुट 9 सो आउटपुट गुडा को होछि रेंज सो एटा तो हला कोडोमेन एंड हियर रेंज सेट माने कोन लिखिबी 1 4 9 दिस सेट have range so this is the difference between range and codomain okay set b is codomain and function ro output गुडा कर सेट ता होछि रेंज बेले बेले codomain is equal to range हे परबो ओके दिस केस रे हम कोन देखुचे दिस केस रे हम देखुचे रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ना बेले बेले रेंज इज इक्वल टू बी कोडोमेन हे परबो इफ दिस सेट ट्रू 16 और 25 को एब्सेंट कर देबी ताहले 149 रहिला 149 रहले बी सी कोडोमेन दैट केस रे कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज सो रेंज कैन बी सबसेट ऑफ कोडोमेन रेंज कैन आल्सो इक्वल टू कोडोमेन ओके बट कोडोमेन के सबसेट ऑफ रेंज हे परबो की कोडोमेन माने दिस कोडोमेन सेट टा के रेंज रो छोटो हे परबो की नो बिकॉज कोडोमेन भीतर प्रेजेंट थिले ही सेटा फंक्शन है रेंज पे आसीबो सो रेंज मे बी सबसेट ऑफ कोडोमेन और इज इक्वल टू कोडोमेन बट कोडोमेन कैन नॉट बी सबसेट ऑफ द रेंज this is the simple thing about domain codomain range गोटे तेरा एग्जांपल मु नोट रे देछि लिखि के आराम रे बुझ दे पाइबो now pause the video and write the note 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 now pause the video and write the note. Two important terms, image and pre-image. Very simple. Consider a function f of x is equal to x cube from set A contains 2, 4, set B contains 1 to 100. All elements 1 to 100. Okay, so here if mu function set को order pair लिखिबी ताहेले 2 x 2 हेले y केते होची 8 is present in codomain set then 4 हेले x cube कोन आछी 64 that is also present in codomain set so this is the function so domain माने 2 4 equal to set A हला range माने 8 64 codomain माने 1 to 100 so range is the subset of codomain हला so here what is image pre-image look at कहा जाए here 8 is image of 2 and 2 is pre-image of 8 माने कोडोमेन सेट एलिमेंट गुड़ाक जे फंक्शन भितर को आसीला से गुड़ाक होची इमेज ऑफ डोमेन सेट रो करेस्पोंडिंग एलिमेंट रो बुझिला इमेज के कोडोमेन सेट रो दोज एलिमेंट्स
जे फंक्शन भितर अच्छी से गुड़ा हूँ इमेज कहार इमेज करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ डोमेन सेट बा एमती लिखा है 8 इज इमेज ऑफ 2 2 इज प्री इमेज ऑफ 8 बा फंक्शन ने जदि सेट ए रु सेट बी को डिफाइन कराई मु कहि दे परिबी बी इज इमेज ऑफ ए एंड ए इज प्री इमेज ऑफ बी सिंपल मीनिंग इमेज प्री इमेज को क्वेश्चन रे काले लागि जीवो इमेज और प्री इमेज चलो सिंपल मीनिंग टा जानथिया दरकार नाउ two functions when they will be equal. Two functions will be equal if their domains are same, range are same, and the value of f of x is also same for all values of x. x जहाँ नौ आउटपुट टा दिस फंक्शन रे जहाँ आसुव अदर फंक्शन में से आसुव एंड से डोमेन सेम हो रेंज सेम हो वेरी सिंपल जिनसटे ए किसी क्वेश्चन ना देन रियल फंक्शंस कौन रियल वैल्यूड फंक्शन बा रियल फंक्शंस कौन ना इफ डोमेन सेट आउ कोडोमेन सेट रो एलिमेंट गुड़ाक रियल नंबर भितर आसुची बा सबसेट ऑफ रियल नंबर होची ताले से गुड़ाक को रियल फंक्शंस कहा जाए देखो सेट रे हमें नंबर न नै कि ए बी सी a1 b1 c1 नहीं परिबा दिस सेट रे सम पर्सन्स नहीं परिबा राम गोपाल हरि दिस सेट रे भी सम पर्सन्स नहीं परिबा से मानक भितर रिलेशंस डेवलप करि परिबा सो से गुड़ाक रियल फंक्शन कहा जाए नहीं both domain और codomain set if real number रो सबसेट हैला बा पूरा real number हैला then they are real functions हमर पढ़ा पढ़ीटा पूरा real functions को बेस करके अछि ओके तो पिला माने आज रो क्लास एमिति now pause the video and write the note now pause the video and write the note